हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में जैसे देखा कि नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट। सो मैनी पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनको पॉलिटिकल साइंस को एज एन आर्ट समझते हैं। जो कभी कई लोग कई ऐसे थिंकर्स हैं जो इस बात को नेगलेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट नहीं बल्कि एज ए साइंस है। So, in this, American political thinker like David Easton tries to establish a scientific basis of political science. According to Aristotle, political science is a master science through which civilization could be saved. Like this, many political thinkers argued in favor of the scientific nature of the political science. So they gives following arguments in favor of the notion as a political science as a science. There are many political theories which are based on facts and verifiable data. Example, voting behavior and theories of election. The government itself is a continuous experiment. It is possible to make predictions on the basis of social experimentations to a certain extent. Fourth is broad conclusion can be drawn in political science such as freedom of speech and independence of judiciary are essential for democracy. Political science is this science though not like the physical science, it is a social science. 6 point American political scientist Robert Dahl states that political science is both as a science and an art. So ये फेबर में जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ होता है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम इसके द्वारा जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो हम कर सकते हैं, लाइक एक्सपेरिमेंट जैसे कर सकते हैं, तो उनके तौर पे हम ये हुआ नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। अब हम इसके आगे देखते हैं स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है। बेसिकली अगर इन जनरल देखें तो इसको टू पार्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, देन वन वर्ड इज पॉलिटिकल फिलोसफी थ्योरी एंड द सेकंड इज अप्लाइड पॉलिटिक्स। सो दीज टू टाइप्स। नाउ इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम यहाँ देखेंगे दो स्कोप होते हैं। इस जो स्कोप्स हैं, चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस implies its jurisdiction or subject matter. Political science is a very wide and comprehensive subject. There is no agreement among the political scientists as regarded to the scope of political science. Political science as a discipline deals with various aspects like, अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इज अ ह्यूज लार्ज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आगे चल के हम जो सेमेस्टर में पढ़ेंगे कई इसके जो स्कोप है एज वी स्टडी एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, all these cover up inside the political science. In short, in short, we can say scope of political science in which we study about a study of the state and government, राज्य और सरकार दोनों की स्टडीज़ में हम करेंगे। A study of political theory, study of political institutions, study of political dynamics, study of political behavior of a man, a study of international relations on international law. So in this, let's we take one by one. Start from our study of the state and government. Political science primarily studies the problem of the state and government. The state is defined as a group of people organized for law within definite territory. The state possesses four elements, that is population, territory, government or sovereignty. So government is an agent of the state. Political science studies the activities of the state and explains the aims and objectives of the state and government. बेसिकली अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये किसकी स्टडी करता है, तो ये स्टडी करता है प्रॉब्लम बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब स्टेट किससे बनता है? स्टेट चार एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, जिसमें आता है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट का एक एजेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एंड एक्सप्लेन्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द state and government.
A study of political theory. Then the second scope of political science. Political theory is a major branch of the political science on the basis of political ideas and thought of political thinkers. Political theory formulates definitions or concepts like equality, political obligations, democracy. मतलब कि इससे ये है कि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम काफ़ी सारी थ्योरीज की स्टडी करते हैं जिसमें कि इक्वालिटी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस डेमोक्रेसी all these topics cover up inside the political science as a study of political theory. Then the third scope as for study of political institutions, हम इसके अंदर काफ़ी सारे institutions की study करते हैं political institution में. So the next heading is study of political dynamics. Sphere in which means the current forces at work in government on politics. It covers a wide range and includes the study of political parties, public opinion, pressure groups, lobbies, etc. A scientific study of the working of these political dynamics helps to explain the political behavior of individuals and different groups. The study in this field is often done in collaboration with other social sciences like sociology, anthropology and psychology. बेसिकली अगर हम इसकी देखें कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डायनेमिक्स, ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को ही नहीं कवर करता बल्कि इसकी कई सारी जो शाखाएँ हैं एज अ सोशल साइंस लाइक सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी. These are all the collaboration which we study in political science. It is also a study of political behavior